नमस्कार आपण मानक समस्त को यह वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आपण सहित +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर बा DSE पेपर 1 रो आमे नीड 1 जहाँकि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स 3 जनरेशन राइट्स रो समस्त इंपोर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन आपण सह डिस्कस करबी। एही डिस्कस टी आपण मन ध्यान दी सुनतु काहेकि ना एथिरे सब इंपोर्टेंट हम डिस्कस करबा। ता सहित यार नोट्स मध्य आपण किपरि पाई परिबे मु आगु कहबी। तो चलନ୍ତୁ स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट टाइम किछि फिल इन द ब्लैंक्स देखिबा। तो फर्स्ट आसीबो ह्यूमन राइट्स आर कॉन्सेप्ट ऑफ डेस क्लाइम ऑफ इंडिविजुअल। हमर ह्यूमन राइट्स माने कोन इंडिविजुअल क्लाइम करे ना मोरल क्लाइम। ह्यूमन राइट्स डेस फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स इनएलिएनेबल माने कैन नॉट बी ट्रांसफर। ह्यूमन राइट हमर कोन ट्रांसफर हे परबोनी। ह्यूमन राइट्स व्हेन गारंटेड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज डेस। जेतेबेले कि हमर जो मानविक अधिकार जेतेबेले लिखित संविधान द्वारा दिया जाए सेतेबेले ताहा फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार रूपे हो जाए। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंटली डेस। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंटली यूनिवर्सल माने दैट एक्जिस्ट इन नेचुरल बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग। ओके ह्यूमन राइट्स ऑफ लिमिट पावर ऑफ डेस। ह्यूमन राइट्स लिमिट ऑफ द पावर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट देखिबा नेचुरल राइट्स थ्योरी वाज गिवन बाय डेस। नेचुरल राइट थ्योरी जो थिला ताहा थॉमस हॉब्स को द्वारा माने दिया जाइतिला। द फेमस बुक ऑफ हॉब्स वाज दिस। हॉब्स को प्रसिद्ध बही कोडा ना लेवियानाथ मन रखंतु इंपोर्टेंट। जॉन लॉक स्टेटेड हिज आइडिया ऑन नेचुरल राइट्स इन हिज बुक डेस टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। एही टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट रे जॉन लॉक तांकर नेचुरल राइट आइडिया को एही बही रे लिखिथिले। ऑल मेन आर बोर्न फ्री बट एवरीवेयर दे आर इन चेन ए स्टेटमेंट ऑफ रूसो। माने मनीष जन्म होता है माने मुक्त भाव जन्म नहीं किंतु से परे आस्ते आस्ते सब चेन रे बंधा हो जाए। द फेमस बुक ऑफ जीन जैक्विस रूसो वाज डेस ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखिबा द मैग्ना कार्टा 1215 इज आल्सो नोन एज देश द ग्रेट कैरेक्टर। द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स वाज इनैक्टेड इन देश। इंग्लिश बिल राइट केबे हेकला ना डिसेंबर 1689 1679 डिसेंबर 16 रे इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स वाज इनैक्टेड। ओके माने कार्यकारी होतिला। The independence of 13 states of America is known as this. The independence of 13 states of America is known as American Declaration of Human Rights 1776. The US Bill of Rights was enacted in 17 September 1787. 17 September 1787 रे the Bill of जो US Bill Rights enacted होतिला। The French Declaration of Rights of Men and of the Citizen was held in 1789. The Institute of International Law adopted the Declaration of International Right of Men in this जो Institution of International Law जो थिला ताहा adopt केबे हितला ना डिक्लेरेशन 1929 रे ताहा को adopt कराइतला। नेक्स्ट देखिबा द यूएन चार्टर 1945 वाज अप्रूव्ड बाय डेस स्टेट्स 81 81 स्टेट द्वारा ताहा को अप्रूव कराइतला जो यूएन चार्टर को। द यूएन चार्टर वाज साइन इन डेस कॉन्फ्रेंस ना सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। ए सब कॉन्फ्रेंस गुडी को मन रखंतांतु। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय डेस ना जनरल असेंबली द्वारा एहा अडॉप्ट कराइतला। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंसिस्ट ऑफ दिस आर्टिकल ना 30 टी आर्टिकल रहछि यूएन रे यूटी जो ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ह्यूमन राइट्स रे यूटीएचआर। ओके 30 टी आर्टिकल मान 30 टी आर्टिकल रहछि। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली इन डेस ना 10 डिसेंबर 1948। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिबा द मॉडर्न मांगा कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट इज इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। द फर्स्ट जनरेशन इंक्लूड्स द राइट्स ऑफ डेस एंड डेस पॉलिटिकल राइट्स। द फर्स्ट जनरेशन इंक्लूड्स द राइट्स ऑफ सिविल एंड political rights. The second generation of rights include this ना social। फर्स्ट रहिला हमर सिविल पॉलिटिकल सेकेंड रे सोशल सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चर मन रखितांतु। द डेस जनरेशन ऑफ राइट्स हम आगु सेकेंड टा हमर होछि इक्वालिटी ऊपर। The second generation of human rights is based on social justice. The third generation of rights is based on solidarity. The international non-governmental organization DES and DES are fighting to protect human rights in immensely international and human rights watch. United Nations Rights Commission is an DES organization. United Nations Rights Commission is an international organization. Human rights as a moral claims is DES in character na universal character. The first generation of human rights is also called blue rights.
The second generation of human rights is also called as reckless. The third generation of human rights called as green right. तो मन रखि दियंतु फर्स्ट जनरेशन है हमर ब्लू राइट, सेकंड जनरेशन है रेड राइट्स आउ थर्ड जनरेशन है ग्रीन राइट। ओके ये सब मन तो कंफ्यूजन हेबेनी। नेक्स्ट देखिबा ह्यूमन राइट्स आर डेज as they are not granted by any person on authority ना inherent। नेक्स्ट देखिए वन वर्ड आंसर। तो फास्ट टाइम फिल इन द ब्लैंक देखिए बर्तमान किसी वन वर्ड आंसर देखिए। तो व्हिच राइट्स आर इन एनेबल फंडामेंटल राइट ना ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन कहीं ना एगुलो ट्रांसफर करहेबनी से इन एनेबल फंडामेंटल राइट। व्हाट डज ए राइट रिफर। ए राइट रिफर कौन क्लाइम और डिमांड। राइट मैंने कौन गोटे अधिकार डिमांड आम इच्छा आम कौन डिमांड कर। व्हाट इज इफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन ह्यूमन राइट्स आर ग्रांटेड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज व्हिच राइट ना फंडामेंटल। आगुरी हम कहले जो गोटे ह्यूमन राइट मानविक अधिकार गोटे लिखित समय द्वारा दि जाए ताहाकू मौलिक अधिकार कहुए फंडामेंटल राइट बोली कहुए। Which conception of human rights locates the centrality of human dignity? The Universal Declaration of Human Rights, Convention of Human Rights locates the centrality of human dignity. Which nature of human rights are conferred on an individual due to the very nature of his extension and inalienable? What does refer that the fulfillment of one right cannot be had without the realization of the other na interdependent? What does refer that human rights are same for all na universal? यूनिवर्सल दैट ह्यूमन राइट्स आर सेम फॉर ऑल माने समस्त में समान। व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट ना डायनामिक। ह्यूमन राइट्स डायनामिक रही थाए। व्हिच पावर इज लिमिटेड बाय द ह्यूमन राइट ना स्टेट पावर। आम स्टेट पावर माने हमर जो ह्यूमन राइट को मानविक अधिकार को लिमिट करती। नेचुरल राइट्स थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय व्हिच फिलोसोफर्स। जो नेचुरल राइट थिला ताहा थॉमस हॉब्स जॉन लॉक रूसो द्वारा जहाँ कौन डेभलप हो जाए दार्शनिक जो थे से हु वाज द फर्स्ट चैंपियन ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट ना थॉमस हॉब। Who is regarded as the greatest master of natural law school ना रूसो। Which generation of rights deals with the civil political first जिन आम आगे कहते फास्ट सिविल पॉलिटिकल तापर सोशियो इकोनॉमिक ये सब आसो। ओके आम देखा ये सब कौन कौन। Which generation of rights deal with the civil and political ना the first generation of rights civil political। Which the most significant constitutional document of all human history the Magna Carta 1215। What is the other name of the Magna Carta ना the Great Carta 1215 other na Magna Carta रो। How many classes were there in the Magna Carta 1215 na 33 clauses। When did the English Bill of Rights were enacted 16 December 1689। When did the American states declare their independence 4 July 1776 रे। ओके एरा मन रखते 1776 4 जुलाई रे अमेरिका तांगर स्टेट को गोटे इंडिपेंडेंस बोली डिक्लेयर करथिले। एरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अमेरिका जो डिक्लेयर करथिले। हु डिड प्रपोज as many as 12 amendments in the form of bill rights ना मेडिसन प्रपोज as many as 12 amendments in the form of the Bill of Rights। When did the US Constitution enacted the US Bill of Rights in 17 September 1787। When did the National Assembly proclaim the rights of the men and the citizen of the France in 4 August 1789। Which institution did adopt the Declaration of International Rights of Men the Institutes of International Law। How many states did adopt the UN Charter 1945 ना 51 states did adopt UN Charter 1945 जो UN Charter थिला 51 स्टेट ताको अडॉप्ट करथिले। नेक्स्ट देखिबा when did the Universal Declaration of Human Rights was adopted by General Assembly ना 10 December 1948 रे ताको अडॉप्ट कराइथिला। नेक्स्ट देखिबा how many articles are there in the UDHR माने Human Declaration of Human Rights रे केते ना 30 आर्टिकल। Which rights are said to be contingent to the law of land na natural rights। Which generation of rights refers to the environmental and developmental rights the third generation of rights refers to the environmental and developmental rights। Which generation of rights is referred as socio and economic right na second generation rights। Which generation of rights based on the solitary na third generation right solitary। okay तो इतले किछि 1 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन हमें नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन करबा। तो यूनिट 2 रो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रो हम नेक्स्ट डिस्कशन करबा। थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो माने कि नोट्स चाहती डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देबी आपण जॉइन हेकि ताहा पाई परिबे।